Hello. In this video, we will study about the canal breaches, canal lining, and also the waterlogging phenomenon. Now, in previous video, we have learned what are the canal losses and also the maintenance of canal and maintenance of the service road. Now, in this video, we will study about the canal breaches first and then the water logging phenomenon and canal lining phenomenon. Now, the canal breaches. What is mean by canal breaches and how it happens? Canal breach or the tearing of the canal bank takes place when canal is in filling. मतलब कैनाल ब्रीच क्या होता है कि कैनाल के जो जो बैंक्स होते हैं दोनों साइड में जो भी उसके बैंक्स होंगे वहां पे कट आएंगे. Okay, in short, canal breaches means the cuts which happen in the canal banks. Okay, अभी इसकी वजह से क्या होगा कि कैनाल में से जो भी पानी फ्लो हो रहा है आफ्टर फ्लडिंग the water will flow through that breaches also. Okay, and then the breach will soar up and widen up. Okay, this is the general phenomenon. During a canal breach, a big gap forms on the side and the large canal discharge rushes out, doing the ultimate unlimited damage. ऑब्वियस है कि कैनाल ब्रीच में से जो भी पानी फ्लो होगा वो डैमेज करेगा कैनाल बैंक्स को. अगर कैनाल बैंक्स डैमेज होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैनाल को भी डैमेज होगा. ओके, तो कैनाल ब्रीचेस जो है वो अल्टीमेट डैमेज कॉज कर सकते हैं होल कैनाल को, कैनाल सिस्टम को. ठीक है. नाउ द रीजंस फॉर कैनाल ब्रीचिंग. फर्स्ट इज ब्रीचिंग, मतलब ये कैनाल ब्रीचेस जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं. फर्स्ट इज ब्रीचिंग ड्यू टू डिफेक्टिव डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक. ओके, due to the defective design and construction of the bank. इसके अंडर क्या होगा कि जो भी आप लोग डिजाइन करेंगे वो अगर डिफेक्टिव हुआ एंड कंस्ट्रक्शन जो करेंगे वो भी अगर डिफेक्टिव हुआ तो ब्रीचेस फॉर्म होंगे एंड दैट गैप विल वाइडन अप. ओके, सेकेंड इज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सैचुरेशन gradient. Here, the soil particles on the outer slope are dislodged and flown away along with the seeping water. A cavity, therefore, is formed in the bank which ultimately develops into a breach. Okay, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, अलोंग स्लोप जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो डिसलॉग होंगे. ओके, वो डिसलॉग होने की वजह से वो क्या होंगे, पानी पानी से फ्लो होंगे, वाटर जो भी फ्लो हो रहा है अलोंग दैट वाटर सीपिंग वाटर, वो जो डिसलॉग्ड पार्टिकल है दैट डिसलॉग्ड पार्टिकल विल आल्सो फ्लो विद द सीपिंग वाटर. ओके, वो वाटर सीप आउट हो रहा है तो उन पार्टिकल की वजह से कैविटी फॉर्म होगी. ठीक है, एंड अल्टीमेटली दैट कैविटी विल फॉर्म अ लार्ज ब्रीच. ओके, थर्ड इज ब्रीचिंग ड्यू टू द rush of water through rat holes or shories. This is a simple phenomenon. रैट होल्स जो भी होंगे वहां पे उसमें से भी वाटर क्या होगा, सीप आउट होगा. ड्यू टू दैट सीपिंग ऑफ वाटर द cavity will expand and ultimately it forms a canal breach. Okay, now fourth is piping. The piping near downstream toe may ultimately cause subsidence of canal banks. Okay, piping is also a simple phenomenon which cause a breaches, canal breaches. Last is a wilting cut. A wilting cut
in the canal bank either for unauthorized irrigation or for allowing a flood water to get into the canal to save an area from submergence. मतलब जो विल्टिंग कट फार्मर्स या कल्टीवेटर्स जो विल्टिंग कट प्रोवाइड करेंगे टू डू अ अनऑथोराइज्ड इरिगेशन, मतलब अनऑथोराइज्ड इरिगेशन के लिए किसी भी कैनाल में से एक छोटा सा कट, विल्टिंग कट अगर प्रोवाइड किया तो उसमें से पानी फ्लो होने की वजह से दैट कट विल एक्सपांड एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स अ ब्रिज. Okay, so that will cause also canal breaching. Now how to repair that canal breaches? There is a particular procedure for that. Firstly, first step is immediately after a breach occurs, the canal discharge should be diverted to a nearby escape channel on the upstream side, or the canal should be closed from the head to stop the outflow completely. जब भी ब्रिज ऑकर होगा तब क्या करना है हमें, कैनाल डिस्चार्ज जो है वो डाइवर्ट करना है. किसी भी एस्केप में कैनाल एस्केप अगर उसमें फॉर्म किया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कैनाल फ्लो हो रहा है वो डाइवर्ट करेंगे इनटू द कैनाल एस्केप. ओके, टू अवॉइड द लार्ज कैनाल ब्रिज. अगर एस्केप उस कैनाल में नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि उस कैनाल में जो भी सप्लाई आ रहा है वो हम लोग स्टॉप करेंगे. ठीक है, कंप्लीटली स्टॉप करेंगे. मेनी अ टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लोज द कैनाल फ्रॉम हेड एज द इरिगेशन ऑफ एरिया इन बिटवीन में सफर. मतलब जो भी हम लोग उसका सप्लाई है कैनाल का वो कंप्लीटली हेड से स्टॉप नहीं कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि आइदर हम लोग क्या करेंगे कि कैनाल एस्केप में वो डाइवर्ट करेंगे, और क्या करेंगे कि वो जो सप्लाई उसमें आ रहा है वो सप्लाई हम लोग कंप्लीटली स्टॉप करेंगे. अभी ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि कैनाल फॉर्म क्यों करते हैं, फॉर द इरिगेशन पर्पस. ओके, अगर उसका पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसका यूज ही नहीं है, कैनाल का यूज ही नहीं है. ओके, सो वी कांट स्टॉप द सप्लाई ऑफ कैनाल from the head completely. Okay, so the second step is provide the steps in the sides of the gap so that the earth to be deposited from closing the gap forms a good bond with old surface. Okay, we have to provide the steps in the sides of the gap. Now derive two lines of bala piles in the gap in the inner side of the bank and fill the space in between by planks and bushes and with sand bags on the tops. The fourth step is we have to cut down the outflow considerably and velocities will reduce here. Okay, now the fifth step is collect a sufficient amount of earth on both sides of gap. The earth collected should either be from spoil bank nearby or from the borrow pits. This earth material is then dumped up from both sides of the gap to form a ring burned on outer side. The opening in between pile lines and the gap is then filled with earth in layers, which should be properly compacted at optimum moisture content and the new bank is prepared. ओके, जब भी हम स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे उसमें बोरो पिट से सॉइल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, सॉइल हम लोग डंप करेंगे एंड आफ्टर डंपिंग दैट सॉइल what happened, a ring bund will form, and after that a new bank is prepared.
Okay, this is about the canal breaches. Now we'll move further for canal lining. Okay, what is mean by canal lining, and what is the necessity of it, disadvantages, advantages, we'll discuss here. कैनाल लाइनिंग सिंपल फिनोमिनन है. लाइनिंग ऑफ अ कैनाल मीन्स उसके जो भी वेटेड पेरीमीटर है उसका, दैट वेटेड पेरीमीटर शुड बी लाइन अप विथ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कंक्रीट, सीमेंट mortar और anything else. So necessity of canal lining, what is the necessity of canal lining? First is to minimize the seepage losses. ओके मतलब कैनाल अगर लाइन किया हुआ होगा तो क्या होगा कि उस पे उसके बेड में से पर्कोलेशन एंड सीपेज लॉसेस कम होंगे. ओके, सो फर्स्ट इज टू मिनिमाइज द सीपेज लॉसेस. सेकेंड इज टू इंक्रीज द डिस्चार्ज इन कैनाल by increasing the velocity. Okay, to increase the discharge in canal by increasing the velocity. If the canal is lined, we can increase the discharge. Third is to prevent erosion of bed and sides due to high velocities. If that canal is lined canal, then erosion phenomenon will occur in a very less manner. Okay, so we can provide high velocities for the flowing water. Next is to retard the growth of weeds. मतलब अगर लाइन कैनाल हुआ तो उसको जो भी विड्स है, विड ग्रोथ मिनिमाइज होगी क्योंकि उनको रूट्स के लिए सॉइल नहीं मिलेगी. तो विड ग्रोथ तो मिनिमाइज होगी. इसकी वजह से क्या होगा, सिल्डिंग भी नहीं होगा एंड लॉसेस भी कम होंगे, वेलोसिटीज भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. लास्टली टू रिड्यूस द मेंटेनेंस ऑफ कैनाल. अगर अनलाइन कैनाल हुआ तो उसका सोरिंग फिनोमेनॉन ज़्यादा होगा. अगर सोरिंग ज़्यादा हुई तो उसका मेंटेनेंस क्या करना पड़ेगा, मतलब पीरियोडिक मेंटेनेंस उसका करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर लाइन कैनाल है तो उसका मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस रिड्यूस होगा. मेंटेनेंस करना पड़ेगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी. So these are the necessities of the lining canal. Now the advantages of the lining. In which manner the canal lining is more profitable to the particular canal. First is the lining canal prevents the seepage losses. ओके मतलब यहाँ पे सीपेज लॉसेस कम हो रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एंटी लॉगिंग मेजर हुआ, एंटी वाटर लॉगिंग मेजर हुआ. सो दस मोर एरिया कैन बी इरिगेटेड बाय द वाटर विच इज सेव्ड. द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन इज देयरफॉर रिड्यूस्ड. कॉस्ट ऑफ इरिगेशन इज देयरफॉर रिड्यूस्ड. अभी सीपेज लॉसेस कम हो रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे इरिगेशन की कॉस्ट रिड्यूस्ड होगी एंड वी कैन इरिगेट मोर एरिया इन दी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर. ओके, अभी सीपेज लॉसेस कम है, सो आई हैव mention here that it is a anti water logging measure. Okay, the lining of canal is an important anti-logging measure as it reduces seepage losses. Okay, secondly, it provides smooth surface. Okay, the lining provides a smooth surface. The roughness coefficient is therefore decreases. मतलब frictional losses यहाँ पे decrease हो जाएंगे. Okay, the resistance to flow is also decreases. So therefore the velocity of flow in line canal will increase and obviously the discharge will increase and more area we can irrigate. Secondly,
increased velocity helps provides the flatter bed slope. In this, the increased velocity minimizes the losses due to evaporation. Okay, the increased velocity minimize the losses due to evaporation, and the increased velocity helps to provide a narrow cross section for line channel. Okay, the increased velocity will help to provide narrow cross section for a line channels. Secondly, a increased velocity or a higher velocity helps in providing a flatter hydraulic gradient or a bed slope, which ultimately prevents the silting of channel. मतलब higher velocity है तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सिल्ट पार्टिकल्स है, वो डिपॉजिट होंगे ही नहीं, तो सिल्टिंग का यहाँ पे सिल्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंक्रीज वेलोसिटी जो है, दैट इंक्रीज वेलोसिटी विल हेल्प टू प्रोवाइड अ फ्लैटर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. इट इज ऑल्सो हेल्प टू reduce the evaporation losses, also help to provide a narrow cross section, and also help to prevent the silting of channel. Okay, next, lining makes the bank more stable in light textured soil also. Okay, the banks of channel or canal will be more stable. Secondly, lining reduces maintenance cost and possibility of breaching due to increased stability of section. यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा एंड कैनाल ब्रीचिंग भी कम होगा. नेक्स्ट इज lining of a canal prevents to reduce weed growth. ओके, weed growth यहाँ पे prevent हो जाएगी. And also lining of canal increases available head for power generation as the flatter gradient is provided, which we can provide a flatter gradient. So the uh, जो पावर जनरेशन करना है उसके लिए जो हेड चाहिए, वाटर हेड चाहिए, वाटर की डेप्थ चाहिए, विच दैट डेप्थ कैन बी इंक्रीजेस, दैट हेड कैन बी इंक्रीज. कैनाल लाइनिंग assures more economical water distribution. Okay, canal lining assures more economical water distribution. Now the disadvantage, these are the advantages of lining or canal lining. Secondly, disadvantages of lining. What are the disadvantages of lining? There are few disadvantages of a canal lining. First, canal lining requires a heavy initial investment. Okay, because we have to construct two whole perimeter of that canal, so initial cost is very heavy, initial investment is very heavy. Secondly, canal lining is being permanent, it is difficult to shift the outlets very often. मतलब अगर हम लोग ने आउटलेट प्रोवाइड किया है तो एंड दैट कैनाल इज लाइंड कैनाल, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट दैट आउटलेट. ओके, सेकेंडली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर द डैमेज्ड लाइनिंग. अगर कोई भी लाइनिंग जो है, कोई भी पार्ट अगर डैमेज हुआ तो वो रिपेयर करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि उसके अराउंड जो भी पार्ट होगा वो भी पार्ट क्या करना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग वो रिपेयर कर सकते हैं. लास्टली, अ लाइन चैनल सेक्शन इज विदाउट अ berm. So, additional safety provided by the berm for vehicular and pedestrian traffic is absent in the line canal. यह यहाँ पे हम लोग बर्न प्रोवाइड नहीं करते. सो जो एडिशनल सेफ्टी है पेडेस्ट्रियंस के लिए और vehicular ट्रैफिक के लिए, that safety is avoided in line canal. Okay, these are the disadvantages of canal lining. Now, what are the types of lining? There are
various types of canal lining or a lining material which we can used. First is hard surface type lining. Okay, hard surface type lining. In this, there are again seven types. First is cement concrete lining, second shotcrete lining, then precast concrete lining, then cement mortar lining, then brick lining, then stone blocks or undressed stone lining, and last is asphaltic lining. We can see one by one. First is concrete lining. Okay, cement concrete lining. In this concrete lining, this is in very limited use because it has having a high initial cost, but it is having a excellent hydraulic properties because it is a hard surface type lining, and it can provide loss of seepage. It can provide minimize which it can minimize the seepage losses to very large extent, and also it is a firm lining. Okay, firstly, thickness of this concrete lining. The thickness of lining, concrete lining, is governed by the requirement of imperviousness and structural strength. मतलब जिस टाइप की imperviousness चाहिए और structural strength चाहिए, उसके हिसाब से उसकी thickness हम लोग अश्योर कर सकते हैं. फर्स्टली यूजुअल थिकनेस जो है हाँ कंक्रीट लाइनिंग की विच कैन बी प्रोवाइडेड इज फ्रॉम 5 to 10 centimeters फॉर M15 एंड 7.5 to 15 centimeter फॉर M10 कंक्रीट. ओके, नाउ जो भी बैंक स्लोप हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके जो भी बैंक्स होंगे उसको स्लोप जो प्रोवाइड करेंगे, दैट स्लोप्स earthen banks of a canal upon which lining has to rest are made as at a self supporting slope so that no earth pressure is exerted upon lining. मतलब जो slope provide करेंगे वो self supporting slope होने चाहिए so that any other additional earth pressure will not act on that lining. Okay, reinforcement, usually reinforcement is not provided in here, but wherever it is necessary we can provide the reinforcement. Now the construction of this concrete lining. Firstly we have to prepare a subgrade, and it should be compact fully. Okay, now after compaction, that subgrade should be saturate to the depth of 30 centimeter, 30 centimeter. Firstly हम लोग को क्या करना है, subgrade prepare करनी है. After that we have to compact that, and after that we have to saturate that up to 30 centimeter depth. Okay, now up to 30 or 15 centimeter depending upon the soil. For 30 it is a sandy soil, on 50 it is other type of soils. Hmm. Now after this we have to lay the concrete lining in three ways. First, lay a base coat of 1:4 cement sand slurry on the subgrade, or we can spread oil paper on the subgrade, or we can spread crude oil on the subgrade. Okay, now after this the concrete should be lay on that surface subgrade. Okay, now the concrete which is used for lining is generally has a mix ratio of 1:4:8, or 1:3:6, or 1:4:6. Okay, now concrete which we can lay, that is usually laid in alternate blocks. Okay, then the formwork is removed after 7 days and remaining blocks should be laid. Okay, now the curing should be properly done for concrete lining so that cracks are avoided. This is about concrete lining. Secondly, shotcrete lining. Shotcrete lining
is the type of lining, a mixture of cement and sand in the ratio of 1:4, is shot at the subgrade through a nozzle. Okay, it is simply a shotcrete. You have already familiar with shotcrete. This is shot at the uh, subgrade through a nozzle. Thickness of this type of lining is vary from 2.5 to 6.5 centimeters. Okay. Third is precast concrete lining. Precast concrete lining is the type of concrete lining which consists of a precast slabs, usually of 30 centimeter into 90 centimeter, and thickness of each slab is vary from 5 to 6.5 centimeters. Okay. Now the blocks, that these blocks are manufactured with the interlocking arrangement, so we can arrange the precast blocks and interlock it. Okay. And जो उसके joints होंगे, that joint should be grouted with cement and or that can be sealed with asphalt to prevent any seepage losses. ओके. वो इंटरलॉकिंग हो गए. इंटरलॉक करने के बाद उसके जो जॉइंट्स होंगे वो हम लोग सीमेंट मोटर से या फिर asphalt से क्या करेंगे, लॉक करेंगे. सेकेंडली, सीमेंट मोटर लाइनिंग. Cement mortar lining is usually used as a sandwich material between brick layers. Thickness of this is kept from 1 to 4 centimeter. Okay. And जो भी उसका construction है, that construction is usually same as that of as concrete lining. Okay. जो concrete lining की procedure मैंने बताई, वैसे same ही हम लोग क्या करेंगे, cement mortar lining provide करेंगे. Now the brick lining. Here this type of lining consists of a single or double layer of brick masonry or a layer of brick masonry followed by a layer of tiles. मतलब दो layer brick masonry या फिर एक layer brick masonry and a layer of tiles. Okay. First layer is laid on 12 mm लेयर ऑफ 1:6 सीमेंट मोटर. जो भी ब्रिक हम लोग फर्स्ट लेयर में फर्स्ट लेयर जो ब्रिक का होगा वो 1:6 सीमेंट मोटर का पहले हम लोग 12 का लेयर पुट करेंगे सीमेंट मोटर का. उस पे पहला लेयर ब्रिक का आएगा. दी मोटर इज फर्स्ट स्प्रेड ऑन प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड वेटेड सबग्रेड. जैसे हम लोग कॉन्क्रीट लाइनिंग के लिए करते हैं, सब ग्रेड पहले कॉम्पैक्ट करनी है, सैचुरेट करनी है, उसके बाद 1:6 सीमेंट मोटर का 12 का लेयर स्प्रेड करना है. ठीक है. उसके बाद वो ब्रिक का लेयर. ठीक है. नाउ अ 12 थिक लेयर ऑफ प्लास्टर इन 1:3 सीमेंट मोटर इज लेड ओवर द फर्स्ट लेयर. ओके. जो लेयर हम लोग ने ब्रिक का दिया है उस पे प्लास्टर 12 थिक लेयर का प्लास्टर करना है. देन द second layer is laid over it in 1:3 सीमेंट मोटर. ओके. पहला जो लेयर है वो 1:6 सीमेंट मोटर का है, उस पे ब्रिक का पहला लेयर आएगा. उसके बाद वापस उस पे प्लास्टर आएगा 12 का, लेकिन रेशो क्या है, 1:3. ठीक है. उस पे सेकेंड लेयर ब्रिक का आएगा, उसके बाद 1:3 का वापस उस पे प्लास्टर आएगा. द साइज ऑफ ब्रिक स्पेशली मेड इज रेस्ट्रिक्टेड टू 30-15 5 सेंटीमीटर फॉर कन्वीनियंस ऑफ हैंडलिंग. ओके. यहाँ पे जो ब्रिक की साइज है वो रेस्ट्रिक्ट किए हुए है 30, 15 एंड 5. ओके. दिस इज द ब्रिक लाइनिंग. नेक्स्ट इज asphalt lining. Okay. Asphalt lining is carefully controlled mixture of asphalt and grade aggregated mixed, and this is placed at a high temperature of
200 degree Celsius and covered with a 30 centimeter layer of earth material for protection. The mix is placed either by hand or by an equipment similar to that of concrete. जो concrete के लिए यूज करेंगे वही, या फिर हैंड से भी वो asphalt का heated mixture जो होगा वो mixture हम लोग place करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टोन ब्लॉक्स और अनड्रेस्ड स्टोन लाइनिंग. यहाँ पे हम लोग स्टोन ब्लॉक्स का लाइनिंग प्रोवाइड करेंगे. दिस इज अ यूजुअल टाइप ऑफ लाइनिंग. और अनड्रेस्ड स्टोन्स जो है वो भी हम लोग पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अर्थ टाइप लाइनिंग. इन अर्थ टाइप लाइनिंग अगेन देर आर थ्री टाइप्स: soil cement, clay puddle and sodium carbonate lining. First is soil cement lining. Soil cement is a mixture of cement and soil. Name is indicating here. Soil used in the soil cement lining should not contain more than 35% of fine fractions passing through 1200 sieve. The mixture is should be in proportion of 90 to 95% soil and 10 to 5% cement. Okay, उसका मिक्सचर क्या होना चाहिए? सॉइल 90 to 95% एंड 10 to 5% सीमेंट है. नाउ दिस इज थरोली मिक्स्ड ड्राई एंड देन उस पे वाटर ऐड करना है. ओके, टू रेज द मॉइस्चर कंटेंट. Now then this mixture is placed on the subgrade properly and then compacted. Okay. After laying in a ridge is completed, it is covered with wet sand and or a wet straw for 7 days for curing. सेम यहाँ पे भी क्यूरिंग करना है जैसे कंक्रीट लाइनिंग के लिए करेंगे. फॉर 7 days वी हैव टू कवर इट विथ अ वेट सैंड और अ वेट स्ट्रॉ. ओके. नेक्स्ट इज क्ले पुडल सॉइलिंग लाइनिंग. क्ले पुडल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्ले by first exposing clay to weathering. Then it is mixed with the water to bring it to saturation and then it's plugged thoroughly by trampling under man's or cattle's feet. The thickness of lining is 30 centimeter. यहाँ पे क्या करेंगे? सेम जो क्ले पुडल है वो फर्स्ट हम लोग वेदरिंग के लिए एक्सपोज करेंगे. आफ्टर दैट वी कैन सैचुरेट दैट एंड आफ्टर सैचुरेशन thoroughly it can be plugged to the bank or a bed. We can trample it under the man's and cattle's feet. Okay. Secondly, sodium carbonate lining. The mixture consists of clayey soil and sodium carbonate in a proportion of at least 10% clay and 6% sodium carbonate. यहाँ पे भी 10% clay है and 6% sodium carbonate है. The thickness of lining is kept as 10 centimeter. Sodium carbonate lining जो है उसका thickness 10 centimeters होना चाहिए. Okay. Next is buried and protected membrane type lining. Here under this there are also three types. First is prefabricated lightweight membrane. Secondly, bentonite and clay membrane, and third is road oil membrane. First is prefabricated lightweight membrane. In this, these membranes are matted fibers of asbestos or jute and is coated with asphalt. जो फाइबर्स है एस्बेस्टॉस के और जूट के, दैट फाइबर्स शुड बी कोटेड विद asphalt and it is laid on the smooth and prepared subgrade. जो प्रिपेयर हम लोग सबग्रेड करेंगे वहां पे ये फाइबर्स हम लोग क्या करने हैं? पुट करने.
and this is then covered with the earth material. This acts as a membrane, prefabricated membrane for the lining. Secondly, bentonite and clay membrane. This consists of bentonite or clay blanket of 4 centimeter thick, laid over a prepared subgrade and covered with earth. ओके यहाँ पे बेंटोनाइट और क्ले का हम लोग लाइक अ ब्लैंकेट वी कैन लेड दैट ऑफ अ 4 centimeter thickness. Okay, lastly, road oil lining. The road oil sprinkled on subgrade in the thickness of about 1.5 mm is sufficient enough to saturate the subgrade to the depth of 8 centimeter. The subgrade is then rolled so that oil enters the soil pores. यहाँ पे जो रोड ऑयल है दैट ऑयल इज यूज्ड फॉर द लाइनिंग पर्पस. ओके, मतलब पहले हम लोग वो रोड ऑयल जो है वो स्प्रेड करेंगे ओवर द ऑल वेटेड पेरीमीटर, देन दैट इज रोल्ड वहाँ पे करेंगे, रोल करेंगे. रोल करने के बाद क्या होगा कि वो दब जाएगा, उसकी वजह से दैट ऑयल इज एंटर्स थ्रू द फाइन पोर्स इन दैट सॉइल. ओके, which can act as a membrane for the lining. Okay, this is all about the canal lining and the canal breaches. Okay, now we'll move further for the water logging phenomenon. Okay, water logging phenomenon. Next slide. Water logging. What is water logging? Water logging is very simple phenomenon, but it acts in a very severe manner for a particular irrigation system. वाटर लॉगिंग क्या है कि वाटर लॉगिंग नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे वाटर जिस सॉइल पे ज़्यादा है दैट सॉइल इज फुल्ली सैचुरेट, एंड आफ्टर द कैपेसिटी ऑफ सैचुरेशन इज ओवर, द सॉइल की जो सैचुरेशन कैपेसिटी है दैट सैचुरेशन कैपेसिटी विल फिनिश. आफ्टर दैट क्या होगा कि जो वाटर है वो वाटर उस सॉइल पे ऊपर वैसे ही रहेगा, क्योंकि सॉइल विल नॉट percolate or seep it. Okay, that soil is called as a waterlogged soil. Okay, now first is introduction. An agricultural land is said to be waterlogged when its productivity or fertility is affected by high water table. Okay, यहाँ पे water table क्या है, high है. So the fertility or productivity of that particular soil will affect. Okay, the depth of water table at which it tends to make the soil waterlogged and harmful to the growth and subsistence of plant life depends upon the height of capillary fringe, which is the height to which water will rise due to capillary action. जो भी प्लांट्स उस वाटर पे ग्रो होंगे, द वाटर लॉग, इफ द सॉइल इज वाटर लॉग, देन द plant life will severely affect. Okay, because वहाँ पे जो भी कैपिलरी फ्रिंज है, प्लांट की लाइफ तो डिपेंड करती है कैपिलरी फ्रिंज पे. ओके, कैपिलरी फ्रिंज इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ वाटर which will rise due to capillary action. Now this is nothing but the water logging. Okay, it's the simple general introduction of water logging. Now वाटर लॉगिंग होने के बाद इफेक्ट क्या होगा पर्टिकुलर सॉइल पे. द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग आर, फर्स्टली
the soil will infertile. Okay, fertility will reduce. Now first, inhibiting activities of soil bacteria. इस पे क्या होगा कि the liberation of plant food is dependent upon the activity of soil bacteria, which requires adequate amount of oxygen in the air for proper functioning. When the soil pores within the root zone of crops normally grown are so saturated as to effectively cut off the normal circulation of air, the land is said to be waterlogged. जो प्लांट फूड जो प्रिपेयर होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया. ओके, नाउ द सॉइल बैक्टीरिया जो है उन्हें adequate amount चाहिए ऑक्सीजन की फ्रॉम द एयर. ओके, सो दैट दैट सॉइल बैक्टीरिया विल प्रॉपरली फंक्शन. नाउ अगर वो सॉइल वाटर लॉग्ड है तो क्या होगा कि सॉइल बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन इनहेल कर ही नहीं सकते. ओके, सो दैट द सॉइल बैक्टीरिया विल नॉट एक्ट प्रॉपरली और नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अगर सॉइल बैक्टीरिया ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली द प्लांट विल नॉट ग्रो इट्स ओन फ्रूट. Okay, this is the serious effect of waterlogging. Secondly, decrease in availability of capillary water. Here plant life draws its substance from the soil solution round the soil particles, which is drawn into the plants by capillary action and osmosis. If water table is high, the roots of plants are confined to the top layers of soil above the water table, while if water table is lower, the roots of plants have more room for growth. अगर वाटर टेबल हाई है तो जो रूट्स है दैट रूट्स विल कन्फाइन टू द टॉप लेयर, मतलब वो लिमिटेड ही उनको रूम रहेगी फॉर ग्रोथ. अगर वाटर टेबल नीचे है लोअर है देन द रूट्स विल ग्रो लोअर एंड ग्रो मोर. ओके, सो दिस कैपिलरी वाटर विल डिक्रीज बिकॉज कैपिलरी एक्शन तो होगी ही नहीं क्योंकि रूट्स के लिए पानी जो वाटर है वो अराउंड उसके अराउंड सम डेप्थ पे ही उसको अवेलेबल होगा. ठीक है, और वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा सो दैट इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. फॉल इन सॉइल टेम्परेचर. थर्डली, फॉल इन सॉइल टेम्परेचर. दिस इज अ वेरी सिंपल. जो भी वाटर है द वाटर टेबल विल हाई, obviously the soil will more saturate or fully saturate so that the temperature of entire soil will fall. Okay, so the entire atmosphere around that waterlogged soil will also fall. Nextly, defective air circulation. When the water table is high, the drainage becomes impossible and the carbon dioxide liberated by plant root cannot be dissolved and taken away. So the fresh air containing air is not drawn and activity of soil bacteria and plant growth suffers here. This is a very simple phenomenon. जब भी आपकी यहाँ पे ड्रेनेज impossible होगा and then if drainage is impossible then carbon dioxide liberated from the roots it is not dissolved in that soil and so the soil bacteria also will not function well and जो fresh oxygen होगा that fresh oxygen will also not consumed by that soil bacteria, so the plant growth, plant food, all the activities will suffer seriously. Next, the soil rise of salt.
When the rise of water table will occur, obviously the salts from the underneath soil will come up on the top surface, so that the fertility of that soil will uh, hamper. The fertility of soil will seriously affected. Next is delay in cultivation operation. When the areas are waterlogged, the cultivation operations such as plugging and mulching are either impossible or difficult to do. Okay. Next is the growth of wild flora. In waterlogged soil, the natural flora such as water hyacinth grows profusely, so that the crop yield reduces more. Okay, because natural flora जो है वो by using the water, that natural flora will grow wildly, and the crops which we have plugged there, that crop will reduce its growth. Lastly, adverse effect of community health. Obviously, when waterlogged soil is when waterlogged soil is nearer to the community, then the community will suffer from very serious diseases, because the temperature near that area will fall to the normal temperature. Okay. Next is the causes of waterlogging. uh, Waterlogging, the effects or causes from the waterlogging are: firstly, inadequate surface drainage. When the surface is waterlogged, then the surface drainage provided is not adequate. The heavy precipitation is area is not drained off quickly, and the rainwater remains stagnant over the long run. Okay. Secondly, seepage from canal system. In nature, the water table is in state of equilibrium. The amount of inflow is practically equal to the amount of outflow. Thus, if the soil is waterlogged, this equilibrium is upset. Okay, the rise takes place up to the level where increased inflow is balanced by the increased outflow. Now, the increased outflow is mainly because of increase in soil evaporation due to nearness of water table, increased transpiration from plants, and increased discharge in seepage drains. Okay, these seepage losses will also uh, cause the waterlogging. Okay, nextly, over irrigation of field. If we are doing the over irrigation of some field, then the saturation capacity of the particular soil will nearly zero. Okay, the soil will fully saturate, and then it can't seep, or it can't percolate the water, so over irrigation will also cause the waterlogging. Firstly, inadequate surface drainage will cause waterlogging. Seepage from canal system is also caused waterlogging. Over irrigation will also cause waterlogging. Next, the obstruction for natural drainage. If natural drainage is there in particular system, and obstruction is there for that natural drain, then what happened? The water or rainwater will not pass from that catchment. Okay, and it remains stagnant in that particular catchment, so that the soil will obviously waterlogged. Okay. Next, obliteration of natural drainage. Here, sometimes the cultivators plug up and obliterate an existing natural drain. This results the stoppage of storm water flow and
consequent flooding, and so the waterlogging occur. Okay, we should not stop the natural rain. Inadequate capacity of arterial drains. If the arterial drains have inadequate capacity, then the banks, both the banks of that drainage system will overflow, and due to that the waterlogging occurs. The construction of water reservoir. Construction of water reservoir will seep the water from the banks, and obviously the waterlogging occurs. Natural obstruction to the flow of groundwater, same as that of the obstruction to natural drainage. When a natural flow of water is obstructed with some obstruction, then waterlogging occurs. Okay, now lastly, the remedial measures for waterlogging. These are very simple. जो इफेक्ट्स है उसको हम लोग को स्टॉप करना है, दैट विल बी दी रेमिडियल मेजर्स. फर्स्ट इज एफिशिएंट सरफेस ड्रेनेज. कॉजेस क्या है इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, सो वी हैव टू प्रोवाइड द एफिशिएंट surface drainage so that the water logging will not occur. Okay, now second is under drainage by tile drain. अंडर ड्रेनेज भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बाय टाइल ड्रेन, सो दैट द फ्लड वाटर और ओवर स्टॉर्म वाटर विल फ्लो क्विकली. नाउ रिड्यूसिंग पर्कोलेशन फ्रॉम कैनाल. अभी जो कैनाल सीपेज लॉसेस है, पर्कोलेशन लॉसेस है, दैट लॉसेस वी हैव टू स्टॉप. ओके, सो दैट द वाटर लॉगिंग फिनोमेनॉन विल नॉट हैपन. ना पर्कोलेशन लॉसेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्टली लाइनिंग करना पड़ेगा इरिगेशन कैनाल के लिए. सेकेंडली लोअरिंग ऑफ फुल सप्लाई लेवल ऑफ इरिगेशन कैनाल. जो फुल सप्लाई लेवल होगा इरिगेशन कैनाल का, दैट शुड बी लोअर्ड so that percolation losses will not happen. And the construction of intercepting drain, मतलब एक्स्ट्रा ड्रेनेज इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्टली रिस्ट्रिक्शन ऑफ इरिगेशन. यहाँ पे हम लोग को जो कल्टिवेटर्स है वो कल्टिवेटर्स शुड एजुकेटेड, प्रॉपरली एजुकेटेड for the irrigation, and they have knowledge to use economic use of water. It can also reduce the waterlogging phenomenon. Lining of water course. This is same as that of this lining of irrigation canal. The water course should be properly lined so that losses will not occur, percolation losses and seepage losses. Next, removing obstruction in natural drain. जो भी natural drainage है, that natural drainage will flow in natural manner, so we have to remove the obstruction in between. प्रिवेंशन ऑफ सीपेज फ्रॉम वाटर रिजर्वायर. जो भी वाटर रिजर्वायर है, दैट वाटर रिजर्वायर वी हैव टू प्रिवेंट द सीपेज लॉसेस. वी कैन लाइन दैट और वी कैन construct some other drainage system also. Next, depleting of groundwater storage by pumping. Okay, मतलब यहाँ पे we can yeah, we can pump out the surplus water from the groundwater table by using pumping. Secondly, changes in crop pattern. We have to use the crop rotation so that waterlogging will not happen. Also, the adoption of sprinkler method for irrigation. This is the very popular method of irrigation. You have already studied in water resource engineering 1. Sprinkler irrigation will avoid overuse of irrigation water, and it is very economical and um, efficient method of irrigation. So cultivators have the knowledge about all the irrigation types and economic use of particular type of irrigation.
Now this is all about the waterlogging, canal losses, canal lining, canal breaches, and classification of canal. This we we are going to stop here. In next video we will learn about the discharge in canal. Thank you.